हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल DEcode इंटरव्यू में। हम आज बात करने वाले हैं प्राइमरी की, नेचुरल की एंड सर्रोगेट की। ज़्यादातर टर्मिनोलॉजी डेटा वेयर हाउस या फिर आप सीक्वल में काम कर रहे हो, सीक्वल डेवलपर, या फिर आप डेटा इंजीनियर में काम कर रहे हो, तो आपने ये सुना होगा। तो ज़्यादातर लोगों को प्राइमरी कीज़ के बारे में पता होगा कि व्हाट इज़ अ प्राइमरी की एंड हाउ टू डिफाइन अ प्राइमरी की इन अ टेबल। You guys already know about the primary key. So those who don't know, I will explain primary key as well. So यहाँ पे नेचुरल कीज एंड सरोगेट कीज भी देखने वाले हैं, जो ज़्यादातर डेटा वेयर हाउस कॉन्सेप्ट्स में यूज होते हैं वर्ड्स आपने सुने होंगे, बट बहुत सारे लोगों को इसका मीनिंग पता नहीं होता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड नेचुरल, देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सरोगेट की। तो पहले हम प्राइमरी की के बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। तो इट्स एन यूनिक आइडेंटिफायर। So suppose if I take an example, अपने पास एक एम्प्लॉय टेबल है, then EMP-ID, it's an primary key for employee table. Then if you have a order table, then order ID is an key, primary key of order table, right? So one of the constraints while creating a table. Okay, so we are defining the primary key while creation of the table, and some of the rules for the primary key we have, like it don't allow the duplicate records, and it won't allow the null values as well. So nulls are not allowed, and duplicates also not allowed in primary key. So let's say about the natural key. So basically it comes from real world data, in a table we have a mail ID, suppose. Okay, so it can be your natural key, because mail ID is a unique identifier, right? So it's naturally we have identified from a data what we have, so that is called a natural key. So like mail ID, you can take, or if in your data, suppose we have a passport number, right? Passport number or Aadhaar number. So these are the columns having the unique data, and it's a real word identifiers, right? So that's why the key called as a natural key, and we're not defining anywhere. So this is about the natural key. Let's see about the surrogate key. Surrogate keys are system generated keys. Okay, so suppose in your table not defined any keys, or you are not able to identify the natural keys, or primary keys are not defined in your table, then in that case you can define a surrogate key. With the help of the database functions you can create, so like UUID, okay, or row number, or row weeds. Like this you can create in your table surrogate keys. You can create with the help of the functions, like in BigQuery we have a generate UUID function, or we can use the row number, row weed in, I guess, Oracle it's present, to create a unique identifier from 1 to nth, like that we can create, and we can use that the surrogate key for a data extraction, and we can use this column in a join operation, okay, to extract the data.